welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 11 of grammar, and the name of the chapter is the pronouns. So अब ये pronouns क्या होते हैं? Pronouns are the words that are used in place of the nouns, right? नाउन्स बार बार रिपीट ना हो इसीलिए हम उनकी जगह पर प्रोनाउंस का यूज करते हैं, करेक्ट? सो वी ऑल नो दैट एनी वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन. क्या हमें पता है कोई भी वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है उसे एक प्रोनाउन कहा जाता है. नाउ दे से रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली. इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं. The pirates were sitting around a fire. Then they decided to hide the chest full of gold coins in the cave. Peter watched them lifting the chest and carrying it into the cave. He followed them to the cave. In the above paragraph, the words they, them, it, and he are used in place of nouns, pirates, chest, and Peter. Such words that are used in place of nouns are called pronouns. Right? तो इस पैराग्राफ में हमने देखा जो वर्ड्स है they, them, it और he, ये सभी nouns की जगह पर यूज हुए हैं. राइट? नाउन्स कौन से थे? पायरेट्स, चेस्ट एंड पीटर. राइट? तो ऐसे वर्ड्स जो हम नाउन्स की जगह पर यूज करते हैं उन सभी को प्रोनाउंस कहा जाता है. राइट? अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ अ नाउन एंड टू शॉर्टन द लेंथ ऑफ अ सेंटेंस. राइट? कि प्रोनाउन जो है वो यूज किया जाता है किसी भी नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए और हमारे सेंटेंस की जो लेंथ है उसको छोटा करने के लिए. नाउ दे से प्रोनाउंस आर ऑफ मेनी काइंड्स. दे हैव बीन शोन बाय द वेगन्स ऑफ दिस ट्रेन. तो प्रोनाउंस जो है वो बहुत सारे तरीकों के होते हैं, राइट? जो कि यहाँ पर हमें ट्रेन के वेगन्स के थ्रू बताया गया है. सो Let's see. So, सबसे पहले we have a personal pronoun. अब ये personal pronoun क्या है? Personal pronouns stand for persons. Personal pronouns persons के लिए use होते हैं. The first person, the second person, and the third person. Right? The person who is speaking is called the first person. The person listening is called the second person, and the third person animal or thing that is spoken about is called the third person. तो personal pronouns में ये तीन persons होते हैं, first, second और third person. तो अगर हम बात करें about us, right? So the person who is speaking, like I am speaking, so I am the first person, right? The person who is listening, suppose you are the person who is listening to me, so you are considered as the second person. And at the end we have the third person, right, which is known as the person जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. You and me, about what thing or what person we are talking about is considered as the third person, right? Now some pronouns are used as subjects and some are used as objects. कुछ pronouns subjects की तरह यूज होते हैं और कुछ pronouns objects की तरह यूज होते हैं. Objects are the persons or the things that subject does something to. के pronouns objects ऐसे persons हैं या फिर things हैं जिनके साथ subject कोई action perform करता है. Right? Examples. I saw Martha, but she did not see me. He saw Martha, but she did not see him. तो यहाँ पर subjects हैं I और he
और ऑब्जेक्ट्स हैं मी और हिम. नाउ दे से स्टडी द टेबल गिवन बिलो. यहाँ पर हमें एक टेबल दिया गया है जिसे हमें पढ़ने के लिए बोला है. सो यहाँ हमारे पास पर्सन्स मेंशन्ड है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. देन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिंगुलर में एंड देन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लूरल में. क्लियर? सो subjects in the singular one for first, second and third person is I, you, he, she and it. In the object it is me, you, him, her and it. Then plural में the subject is we, you and they. और object में it is us, you and them. Moving ahead. Next we have the reflexive pronouns. अब ये reflexive pronouns कौन से हैं? Let's know. The main feature of this kind of pronoun is the suffix self or selves, right? कि main feature जो है इस kind of pronoun का वो है suffix self या फिर selves. Correct? Words like myself, ourselves, yourself, yourselves, themselves, himself, herself, itself and themselves are called reflexive pronouns. जितने भी self वाले words होते हैं उन सभी को हम reflexive pronouns के नाम से जानते हैं. Because they reflect the action of the verb and the subject. क्योंकि ये किसी भी action को रिफ्लेक्ट करते हैं जो कि सब्जेक्ट करता है. सो पर्सनल प्रोनाउंस चेंज इनटू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. कि पर्सनल प्रोनाउंस को ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में चेंज कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल्स, शी क्लीन्स द यूटेंसिल्स हरसेल्फ. बंटी कैन गो होम हिमसेल्फ. राइट? देन study the given table below, right? तो अब जल्दी से इस टेबल को पढ़ते हैं जहां पर हमें पर्सन दिए हुए हैं, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन. देन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एज सिंगुलर, देन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एज प्लूरल. सो फर्स्ट पर्सन में इट इज आई, माई सेल्फ, वी, आरसेल्व्स, राइट? Second person में it is you, yours. Third person में it is you and yourself. और third person में it is he, she, it, one, himself, herself, itself and oneself in the plural. Then in the object and singular it is they and in the plural it is themselves. Clear? Then, next example, we have distributive pronouns. So, let's talk about these distributive pronouns. So, this type of pronoun refer to persons or things one at a time. कि इस तरीके के जो प्रोनाउंस होते हैं वो रेफर करते हैं पर्सन्स या थिंग्स को जो कि एक ही टाइम पर यूज किए जाएंगे. राइट? दे आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं बिकॉज दे शो दैट द पर्सन्स और थिंग्स आर टेकन सिंगली और इन अ सेपरेट ग्रुप्स. राइट? क्योंकि ये हमें दिखाते हैं कि जो पर्सन्स और थिंग्स हैं वो सिंगली लिए गए हैं या फिर सेपरेट ग्रुप्स में लिए गए हैं. दे आर ऑलवेज सिंगुलर, सो आर यूजुअली फॉलोड बाय अ वर्ब. क्योंकि ये सिंगुलर हैं इसीलिए ये यूजुअली एक वर्ब के थ्रू फॉलो किए जाते हैं. वर्ड्स लाइक ईच, ईदर और, नीदर नॉर are used as distributive pronouns. इन वर्ड्स को distributive pronouns की तरह यूज किया जाता है when there are more than two persons or things. Words like any, no, one or none
are used as distributive pronouns. Right? जब हम दो से ज्यादा पर्सन्स या थिंग्स की बात करते हैं तो हम इस तरीके के वर्ड्स का यूज करते हैं जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं. राइट? एग्जाम्पल्स हैं ईच ऑफ अस विल गेट अ शेयर. Neither of the statements is true. Any of you can come at night. None of the children spoke a word. Next we have interrogative pronouns. So अब ये interrogative pronouns क्या है ये जानते हैं. This type of pronouns ask a question. The main pronouns are who, what, which, whom and whose. कि ये pronouns हमसे question put up करते हैं. Right? जो main pronouns है वो है who, what, which, whom या फिर whose. Correct? Now they are asking us to remember that words like what, whose, which can also become interrogative adjectives if they are placed before noun. तो ये वर्ड्स जो है ये इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी बन सकते हैं अगर ये नाउन के पहले प्लेस किए जाए. राइट? सो सी द डिफरेंस. अब फर्क देखते हैं. इट सेज whose book is that? Interrogative adjective. Whose is that book? Interrogative pronoun. Which horse is yours? Interrogative adjective. Which is your horse? Interrogative pronoun. Then, next kind that we have is demonstrative pronouns. अब ये demonstrative pronouns क्या है? The type of pronouns points out to person, place or thing. Words like this, these, that, those are demonstrative pronouns. इस तरीके के प्रोनाउन जो पॉइंट आउट करते हैं पर्सन, प्लेस या फिर थिंग को. राइट? ऐसे वर्ड्स जो कि है दिस, दीज, दैट और दोस ये सभी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है. नेक्स्ट वी हैव some points to remember which says some of these words can also be used as demonstrative adjectives. कुछ वर्ड्स हैं जो कि demonstrative adjectives की तरह ही यूज किए जाते हैं. When these words are placed before noun, they become demonstrative adjectives. जब ये words place किए जाते हैं noun से पहले तो ये demonstrative adjectives बन जाते हैं. Right? See the difference. फर्क देखते हैं. This is a big hill. Demonstrative pronoun. This hill is big. Demonstrative adjective. Those are my sheep. Demonstrative pronoun. Those sheep are mine. Demonstrative adjective. Clear? Now, moving ahead to the next topic, we have relative pronouns. So, अब ये relative pronouns क्या है? Let's see. So, it says, this type of pronoun relates a noun to the group of words that follow a noun. इस तरीके के जो pronoun होते हैं वो relate करते हैं एक noun से to the group of words that follow the noun. Right? तो examples दिए गए हैं. He is the boy who won the prize. See the color that you wanted. This is the pen which you had lost. The words who, that and which are acting as relative pronouns in the above sentence. तो इन sentences में हमने देखा कि who, that और which ये सभी relative pronouns की तरह काम कर रहे हैं. Then next we have the possessive pronouns. अब ये possessive pronouns क्या है? This type of pronouns show a sense of belonging or possession of a personal pronoun.
इस तरीके के जो प्रोनाउंस होते हैं वो एक सेंस दिखाते हैं बिलोंगिंग या फिर पोजेशन का एक पर्सनल प्रोनाउन के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं, दिस डॉग इज माइन, दैट हाउस इज योर्स। करेक्ट? Now we have some point to remember which says we have learned about possessive adjectives. हमने possessive adjectives के बारे में पढ़ा है. Now study the table and see the difference between possessive pronouns and possessive adjectives. अब जल्दी से टेबल को पढ़ते हैं और possessive pronoun और possessive adjective के बीच में जो difference है उसे जानते हैं. तो यहाँ पर है persons और यहाँ पर है सिंगुलर एंड प्लूरल पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउंस, राइट? तो फर्स्ट पर्सन में एडजेक्टिव्स आर माय एंड माइन, सॉरी, एडजेक्टिव इज माय एंड प्रोनाउन इज माइन, and in plural it is our and ours. In the second person it is your, yours, your and yours in the plural as well. In the third person it is his and her in adjectives, his and hers as pronouns in the singular, and in plural as adjective it is their, and plural as pronoun it is theirs. Correct? Whenever the word acts as a possessive adjective, जब भी कोई word possessive adjective की तरह काम कर रहा हो, it has a noun after it, whereas possessive pronouns are placed at the end of sentence with no word after them. कि जब भी कोई word possessive adjective की तरह काम करे तो उसके पास एक noun होना चाहिए, उसके बाद जब possessive pronouns place किए जाते हैं sentence के end में with no word after them, जब उनके बाद कोई भी word नहीं होता है. The last one that we have is emphatic pronoun, which says this type of pronouns are quite similar to reflexive pronouns. कि इस तरीके के pronouns reflexive pronouns के जैसे ही होते हैं, right? Only the sense of pronoun is different. सिर्फ pronoun का जो sense होता है वो अलग होता है. When the reflexive pronouns are used only for the sake of emphasis, they are called emphatic pronouns. जब हम reflexive pronouns को सिर्फ emphasize करने के लिए यानी उन पर जोर डालने के लिए यूज करते हैं तब उन्हें emphatic pronouns कहा जाता है. जैसे कि examples हैं, he himself said it. You yourself can answer the question. We ourselves are to be blamed. Right? Then, next point that we have to remember is emphatic pronouns can be removed from the sentence without affecting the meaning of the sentence. Right? कि emphatic pronouns जो है वो sentence में से हटाए भी जा सकते हैं बिना sentence के meaning को affect किए. Right? So that was all about the chapter pronouns. I hope you all are clear with them and you all found it very easy. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.